Okay, hello friends. Today we are going to revise ENT in fast mode. So first is nasopharyngeal carcinoma. Nasopharyngeal carcinoma. So most common nerve involved in nasopharyngeal carcinoma is sixth cranial nerve. Sixth cranial nerve, fossa of Rosenmuller. It originates from fossa of Rosenmuller. Most common people, that is race, is Chinese. It is associated with Epstein B virus and also with tobacco smoking. Trototride is seen in nasopharyngeal carcinoma, that is conductive deafness, fifth nerve palsy, and tenth cranial nerve palsy. Tenth cranial nerve palsy, that is palatal paralysis, fifth nerve में ipsilateral temporoparietal neuralgia. Okay, next one. This instrument is maringotom, and it's indicated in ASOM, recurrent acute OM, serous otitis media, aero-otitis media, and atelectic ear. It is not utilized uh, in glomus tumor, because glomus tumor is highly vascular और इसको छेड़छाड़ करने पे काफ़ी ब्लीडिंग हो सकती है. Next point is stridor. Stridor means the noisy respiration. Noisy respiration. It can be inspiratory. It can be biphasic, and it can be expiratory. तो stridor कैसा होगा? That depends on the location of lesion. If it is inspiratory, तो laryngomalacia and retropharyngeal abscess. If it is biphasic, then lesion is at glottis and subglottis level. Can be the cervical trachea. So this corresponds to this level. Okay. Now expiratory. Okay, biphasic के example क्या होंगे कि vocal cord paralysis, subglottic stenosis, and laryngeal papilloma. Expiratory is lesion of thoracic trachea, मतलब more distally. Okay, that is the primary or secondary bronchi में अगर lesion है तो हो सकता है. Tracheal stenosis and foreign body in bronchi can cause expiratory stridor. Okay, next one. This TM condition, you see multiple perforation. This is painless and fall smalling, and it is inside in the children. So this is the condition of tubercular otitis media. तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए ओरल टॉयलेट ATT एंड मस्टॉइड सर्जरी करना पड़ेगा. तो हमेशा ETT पहले देना होता है, देन मस्टॉइड सर्जरी. ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज दिस rhinoscleroma, that is a chronic granulomatous disease. Foul smell, purulent nasal discharge. Woody hard swelling इसमें आती है, and it is caused by Klebsiella rhinoscleromatosis, that is also known as Fris bacillus. Histology of rhinoscleroma will show Mikulicz cells and Russell bodies. Next one is the sign of glomus tumor. What are the sign of glomus tumor? This is highly vascular. So rising sun sign, brown sign, and Phelps sign. These three we have to remember. Okay, next one, unilateral nasal obstruction, enterocoinal polyp, nasoalveolar cyst, and concha bullosa. Atrophic rhinitis, it causes bilateral nasal obstruction. Okay, next one, palatine tonsils, blood supply. No blood supply from internal carotid artery. तो ये नेगेटिव आंसर याद रखना है. palatine tonsil do not receive blood from internal carotid artery, and its venous drainage is from paratonsillar vein. Okay, next one, what is this instrument? This is a digital audiometer. So it is used to prescribe hearing aid, to predict speech reception threshold, degree of
handicap for medical legal cases and to diagnose type of hearing losses. Okay. Thumb sign. What is thumb sign? Where it is seen? It is seen in epiglottitis. So this is the thumb sign. Steeple sign, just like the top of the church, it is seen in a group. Steeple sign. Rule of 10. Rule of 10. Glomus tumor में 10% familial, 10% multicentric and 10% is functional. A little area, it is also known as Kisselback plexus, and it is anterior-inferior of nasal septum. It has एक negative आंसर याद रखना है. No blood supply from posterior ethmoidal artery. Allergic fungal sinusitis. So here is a mucosal thickening with central hyperdense area. ये CT का finding है, CT scan का finding है. Bone erosion and expansion of sinus is seen. Bone erosion is due to pressure and not the fungus. Fungus invade नहीं करता है bone को, तो bone erosion is due to pressure. Its treatment endoscopic surgery drainage करेंगे, ventilation and systemic steroid देना पड़ेगा. Okay. Next one, anterior bowing of maxillary wall. This is known as the Hoffmann-Miller sign, antral sign. एक ही चीज़ है. This is in JNA, juvenile nasopharyngeal angiofibroma, JNA. And its treatment is surgical excision, and sometimes radiotherapy can be required in recurrence cases. Next one is the cochlear implant. What is this? Where it is used? Its electrode is placed over scala tympani, and it is used in severe to profound SNHL for the treatment of severe and profound SNHL. Next one, this vocal cord condition, voice overuse, keyhole appearance of glottis. This is known as phonosthenia. This is the fatigue of laryngeal muscle or weakness of voice. Here two muscles are involved. One is thyroarytenoid and second one is interarytenoid. Next one, otosclerosis. So these 5 type otosclerosis we have to remember. This is the anterior, this is the posterior, this is the circumferential, and fourth one is the biscuit type, and the fifth one is obliterative type. तो biscuit type में annular ligament is spared. इतना याद रखना है. biscuit type annular ligament is spared. Tympanogram. So we have A is the normal here. A plotting is normal. ADD means dissociative. It is high compliance near or at ambient pressure. D means dissociation, ossicular chain discontinuity. So AD plotting here, it is ossicular chain discontinuity को show करता है. Here the TM is thin or lax. S sclerotic, so lower compliance it is seen in ossicle fixation. तो इसमें ग्राफ नीचे की तरफ चली जाएगी. Okay. B is the flat, it is dome shaped graft, no change in compliance with pressure. So यह flat line जो आ रही है, that is the dome shaped. C1 is the maximum compliance with negative pressure. TM condition is retracted here. TM condition is retracted. Okay. Next one, transforming male voice to female. Male voice को female में करना है, तो then we have to increase the pitch. तो lengthening of vocal cord, तो फीमेल वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है? लेंथनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इंक्रीज वॉइस पिच. ओके. नेक्स्ट वन, केराटोसिस obturans. What is this? Large plug of desquamated keratins. Of course in external auditory canal. इसमें bone resorption इसमें होती है, and
that causes widening of meatus, widening of meatus. नेक्स्ट वन इज द म्यूकस ब्लैंकेट ऑफ नोज. इसमें दो लेयर बनती है, म्यूकस एंड सीरस लेयर, एंड इट्स स्पीड इज 5 to 10 mm per minute, and the complete sheet of mucus is cleared in every 10 to 20 minutes. Okay, and mucus goes into pharynx. 600 to 700 ml of nasal secretion in 24 hours. तो 24 घंटे में 600 to 700 ml of nasal secretion हो जाती है. Next one is the Rudy's theory. What is Rudy's theory? Rudy's theory is a hyperplastic of basal cell that causes कोलिएस्टोटोमा. इसको हम एपिडर्मोसिस भी बोलते हैं या फिर केराटोमा भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन, मार्क इवन ट्रायंगल. मार्क इवन ट्रायंगल, मार्क इवन ट्रायंगल, सुप्रामिएटस ट्रायंगल. That is important landmark to locate mastoid antrum. Mastoid antrum. So here is external auditory canal, and इसके ऊपर से ये देख रहे हैं ये temporal bone है. So supramastoid crest of a temporal line. So superior border is supramastoid crest of a supramastoid crest that is temporal line. Okay, anterior, here is the anterior. So anterior is the posterior superior segment of bony external auditory canal, and posterior border is a line drawn as tangent to EAC. पायरिफॉर्म साइनस, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? जब भी कोई फॉरेन बॉडी खाते समय अटक जाती है फूड पार्टिकल, तो यहीं पे डिसलॉज हो जाती है. दैट इज, तो इसके बॉर्डर पूछे जाते हैं. तो लैटरल बॉर्डर इज थायरॉइड कार्टिलेज एंड थायरोहायोड मेम्ब्रेन, एंड मीडियल बॉर्डर इज द एरी एपिग्लोटिक फोल्ड एंड पोस्टरोलैटरल सरफेस ऑफ कैरोटिनॉइड एंड क्रिकॉइड. यह एक छोटा सा बच्चा दिखाया गया है, एंड इट हैज़ द कोआइनल एट्रेसिया. द प्रोसीजर टू सेव दिस पेशेंट is a emergency management that is used McGowan technique. तो चार्ज सिंड्रोम में एक एट्रेसिया ऑफ कोएना यह भी आती है. ओके, सो हाउ टू डायग्नोस कोएनल एट्रेसिया? पेशेंट में छोटे बच्चे में म्यूकोइड डिस्चार्ज आएंगे विथ नो ईयर बबल, एंड कैथेटर जो है that will fail to pass from nose to pharynx, and the CT scan is investigation of choice for choanal atresia. Next one, caloric testing. So this is to देखना है labyrinth function कैसा है, to determine labyrinth function is okay or not. So we are going to produce nystagmus with cold water and warm water. Okay. Cold water nystagmus is horizontal, that is opposite side में, and warm water produces a horizontal way to the same side. And कम से कम कैलोरिक टेस्टिंग में 40 सेकेंड टेस्ट करना पड़ता है वाटर से. ठीक है, एंड टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी एटलीस्ट 7 डिग्री सेल्सियस. वार्म वर्सेस कोल्ड वाटर में 7 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट वन, एप्ले मैन्यूवर इज, इससे क्या होता है? रीपोजिशनिंग ऑफ ऑटोकोनियल डेब्रिज फ्रॉम पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल टू यूट्रिकल. मतलब पीछे से यूट्रिकल में आ जाती है. पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल से यूट्रिकल में पोजिशनिंग करने का हम बोलेंगे एप्ले मैन्यूवर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, रेफर्ड पेन टू ईयर इन टॉन्सिलाइटिस. टॉन्सिल का दर्द कानों तक जाती है. दैट इज कौन से नर्व से? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. या फोर्सेप, दिस इज द एच फोर्सेप. Yes, this is H forceps. This is to reduce nasal septum fracture. Okay.
नेक्स्ट वन एडिनोइटिस. एडिनोइडाइटिस इट इज़ द रैनोलेलिया क्लाउजा. यह नसल ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है एंड बच्चों में एडिनोइड फेसियस होगा, यानी कि पेशेंट का माउथ ओपन होगा, हाई आस्ट पैलेट, हिस्ट अप अपर लिप एंड प्रोमिनेंट क्राउडेड अपर टीथ होगी. यह एक टीएम मेम्ब्रेन टीएम का फोटो दिखाया गया. पार्स फ्लैसिडा. व्हाट इज दिस टॉप वन? दिस टॉप इज द पार्स फ्लैसिडा, ऑल्सो नोन एज द श्रैपनल मेम्ब्रेन. इट इज़ पिंकिश इन कलर, थिन फाइब्रस लेयर होती है एंड दिस इज ओवर लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस. लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस. Waters view. Waters view. What is this Waters view? Waters view is also known as the nose chin position. तो nose chin position है, तो इसमें 37 डिग्री बन रही है एंगल टू ऑर्बिटोमीटल लाइन. इट्स ऑल्सो नोन एज ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू. We have some sign and disease with them. So Hennebert sign is with congenital syphilis. Schwartz sign in otosclerosis. Hazelberger sign in acoustic neuroma. This is the numbness of posterior superior meatal valve, loss of taste, loss of lacrimation. Bracy sign, it is inside laryngocele. Otosclerosis में एक हार्ट नोच होती है एट 2000 हर्ट्ज एंड नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस में अकोस्टिक डिप होती है एट 4000 हर्ट्ज. स्टैचियन ट्यूब total length is 36 mm, bony part is 12 mm and cartilaginous part is 24 mm. Okay, 24 mm. Laryngocele is abnormal distension of saccule, that is in the sinus of larynx, also known as ventricle. So इतना ENT के लिए काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज. ओके, थैंक यू.